Hello everyone. So today I'm going to discuss about TCP handshake, the TCP three-way handshake. So in earlier chapter, or if you are from IT background, you must heard about that before the establishing any connection. A TCP gone through a process which is called TCP three-way handshake. Okay, before you heard all the time that the TCP provide reliable connection, but how the TCP are going to provide reliable connection? Because by doing the provide by doing TCP three-way handshake. What is the three-way handshake that we are going to discuss about in this chapter? So suppose, let's say, this is the laptop, and mm, you open a Chrome and put something google.com. Okay, and google.com, and if you open the google.com, the first request, the message with the https page will created the payload and the get me the web page. Okay, this the message will be created in the web page, in the payload actually. And that payload would not a single packet, there would be multiple packet, 1 2 3 4 5, like these are packet, and each packet should be deliver. Okay, the TCP provide guarantee that each packet will be delivered. How? By doing the TCP three-way handshake. Okay, so let's say these are packet prepared, and it's send the packet one. Okay, the first message arrived on the server. What the server will do? Okay, it acknowledged that packet, right? And he said that I got your packet. Okay, how does that there? By the sequence number. Let's say this packet is 1 2 3 4 5 6 7. Okay, the 7 packet delivered from here to here. 1 2 3 4 5 6 7. Okay, all those packet are delivered to server, and server has to respond. Okay, of all the acknowledgement, all the that I have received this packet, I received this packet, I received this packet, I received this packet, I received this packet. So that is called acknowledgement. Okay, every packet has to be responded. If suppose this packet is not, how client does it know? The question is remain that how client will ensure that every packet is delivered to the server. Okay, that's the main question here. The client will know by the acknowledgement number. Okay, the first packet receive a server, then server will respond and say I got packet number 1. Okay, 2, server said I got packet number 2. This is how the maintain, and this is how client believe that every packet is delivered to the server. Okay, the question is, now the question is that how server will identify that, let's say 1 2, they receive 7 packet. Okay, how does server know the which is the first packet? How he reorder? I know the server can reorder the packets, but how in this situation server going to reorder those packet? Okay, that's the question. Because the server has its own sequence number, right? And let's say computer started with 100, and server maybe might be a on 700 sequence number. Okay, 700 sequence number. So this is how we are going to send the first message, TCP SYN. Let's erase all these and mm, sorry. Shh.
ओके। तो अभी तक जो हमने देखा है वो ये देखा कि भाई लैपटॉप, ये हमारा क्लाइंट मशीन है, इसने एक रिक्वेस्ट भेजी, गेट रिक्वेस्ट, दैट गेट रिक्वेस्टेड broken into packets, and he delivered all those packet, and how the server will ensure that this is the first packet. Okay, that's the server know by doing this first message, TCP SYN message. Okay, the first message in the TCP3 handshake will be SYN. This is the first message sent by that the client is saying to server that I want synchronization with you. Yeah, hello. Client saying is the hello, and here is the my sequence number. In the SYN packet क्या होगा, द सीक्वेंस नंबर क्या होगा, रैंडम होगा। अगर आप देखते हो रैंडम क्या होता है, दैट नीड टू प्रिवेंट अटैक, ओके, एंटी रिप्लाई अटैक, और देयर इज sin attack, there is an n number of attacks can be initiate against the sin message. So the sin is saying that my synchronization number, let's say 15,120, let's say रियल में देखे तो ये नंबर काफी हाई होता है, लेकिन ये लेट्स से 115 द सीक्वेंस नंबर। ओके, नाउ सर्वर गॉट द रेस्पॉन्स, सर्वर गेट a request from client, okay, that my SYN number, the sequence number is 150. Okay, what the server will do, he will respond. Okay, then he will respond to that SYN. Okay, क्योंकि सर्वर का हो नहीं है, सर्वर का सीक्वेंस नंबर कुछ अलग हो सकता है। ही विल से दैट माय सीक्वेंस नंबर इज 315। ओके, तो ही विल से या लेट्स टॉक। ओके, द ही विल सेंड द मैसेज सिन, या सिन 350। ओके, इसने भेज दिया, लेकिन बात ये है ना कि 150 भेजा है, तो इसका एक्नॉलेजमेंट आना चाहिए, तभी क्लाइंट को लगेगा दैट पैकेट इज डिलीवर्ड टू सर्वर, देन ही विल सेंड वन अनदर मैसेज। ओके, दैट इज एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट में क्या होगा, इस नंबर के साथ एक जुड़ जाएगा कि भाई हाँ 115 नंबर पैकेट मुझे मिल गया है, तो क्या होगा 100 प्लस 1, क्या हो गया 151, दैट इज अ होस्ट बाइट। आई गॉट इट। एंड अब क्या चौथा पैकेट क्या भेजेगा, क्लाइंट भेजेगा, किसको, सर्वर को। ओके, क्या होगा एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट में कौन सा, सर्वर का। ओके, दिस सिंग कि भाई यस आई गॉट इट, तो क्या होगा कि भाई जो पैकेट भेजा 350 वो वाला मिल गया, ये जोड़ के क्या भेजेगा एक 351। so this is the how the TCP synchronization works, right? Yeah, have you noticed that this is not a three-way handshake, right? This is a four-way handshake, but TCP only do the three-way handshake, correct? So how it that's because most in that let me again, let me raise this. In the three-way handshake, the second message, okay, in the second message when the server respond back to the client, that would be sin plus एक। sin sin किसका, कि भाई मेरा सीक्वेंस नंबर क्या है 300, और मैं किसको रेस्पॉन्ड कर रहा हूँ 151, मुझे 150 मिल गया है, लेट से 151। ओके, sin प्लस एक, ये दोनों मैसेज कंबाइंड होके एक साथ जाते हैं। ओके, एक्चुअल में अगर पूरा देखे तो
4 मैसेज होंगे, लेकिन ये क्या कर देगा, इस मैसेज में 2 मैसेज आते हैं। एक तो एक्नॉलेजमेंट जाता है वर्क के भाई 151 का मुझे मिल गया है, लेट्स से 151। ओके, एंड ये वापस भेजेगा कि भाई हाँ मुझे मिल गया है। एक्नॉलेजमेंट किसका देगा, सिन 300 का, 301। This is the TCP three-way handshake. This is how they maintain order, packet of orders. This is how the communication happen. Every bit should be acknowledged. कितनी भी जाए पैकेट जाओ, that should be acknowledged by server. Okay, this is the TCP three-way handshake. I hope you understand now. Okay, let again that I will show you in the voice arc. Okay. Mm, let me show you in the voice arc. Okay, I have a communication between this computer to this public server, which is a website on the internet. This is my laptop IP. You can see the first packet, right? TCP SYN message, SYN, synchronization, first packet. Let's open the sync. Original sequence number would be 747. इसका अगर आपको वापस एक्नॉलेजमेंट मिलेगा तो देन यू कैन सी 748, acknowledgement number 748, and in third message you will see ये क्लाइंट ने भेजा, ये फर्स्ट रिक्वेस्ट आप देख रहे हो ना, ये किसने भेजी है, क्लाइंट ने भेजी है। ये क्लाइंट ने भेजी है। सिंक्रोनाइजेशन ये नंबर है, इसका रेस्पॉन्स सर्वर ने किया कि भाई हियर एंड हियर इज माय सीक्वेंस नंबर। सर्वर का सीक्वेंस नंबर है 979। ओके, एंड कंप्यूटर का इनिशियल सीक्वेंस नंबर क्या है, 747, और सर्वर का क्या है, 971। इसका एक्नॉलेजमेंट देखोगे तो कहाँ मिलेगा, ये आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर इसमें मिलेगा आपको। ठीक है, ये एक्नॉलेजमेंट नंबर 748 किसमें, थर्ड मैसेज में, जब किसने किया है, क्लाइंट ने वापस रेस्पॉन्ड किया है। तो फर्स्ट मैसेज में कंप्यूटर ने अपना खुद का रैंडम सीक्वेंस नंबर भेजा, दिस इज द सीक्वेंस नंबर, ये आप देख रहे हो ना, ये सीक्वेंस नंबर। नेक्स्ट ये वायसाक ने अपनी तरफ से लिया ताकि बेटर ट्रबल शूटिंग के लिए, ये ओरिजिनल है ना वो ये है। दूसरे मैसेज में, पहले मैसेज में अगेन, पहले मैसेज में क्या होगा, कंप्यूटर अपना एक रैंडम नंबर चुनेगा कि भाई दिस इज माय सीक्वेंस नंबर। दूसरे पैकेट में सिन एक में क्या होगा, पहली चीज तो होगी इस सीक्वेंस नंबर का एक्नॉलेजमेंट नंबर आएगा, और सर्वर बताएगा कि हियर इज माय सीक्वेंस नंबर। दो चीजें होगी, देख रहे हो। तो सर्वर बता रहा है कि दिस इज माय सीक्वेंस नंबर और हियर इज योर एक्नॉलेजमेंट नंबर, दिख रहा है ना 748, पहले क्या था 747। थर्ड पैकेट में क्या होगा, क्लाइंट भेजेगा कि भाई जो आपने मुझे सीक्वेंस नंबर भेजा है, आई एम एग्री ऑन दैट, एंड हियर इज योर सीक्वेंस नंबर, हियर you can see. Okay, this is a TCP three-way handshake, and now the uh, data start transferring from client to server. Okay, again this is most important thing. Okay, in the sequence number, the random number, the number would be random always. Okay, client will send its raw sequence number, क्लाइंट के अलग सीक्वेंस नंबर होंगे, सर्वर के अलग सीक्वेंस नंबर होंगे। हर पैकेट का क्लाइंट का एक्नॉलेजमेंट करेगा सर्वर, और सर्वर के हर पैकेट का एक्नॉलेजमेंट करेगा क्लाइंट। ओके, this is how, that's why you when you say the TCP, this is very reliable communication. Why? Because every packet should be acknowledged by both parties. Okay, I hope this is benefit for you. Thank you.